ओके परफेक्ट पिलाने टिके कन्फर्म करदे ऑडियो क्लियर आछी टिके कन्फर्म करदे ऑडियो क्लियर प्रणाम प्रणाम सुराज प्रणाम गुड आफ्टरनून निहारिका प्रणाम प्रणाम जेके जगन्नाथ परफेक्ट हो एगेन नमस्कार समस्त को शुभ अपराह्न जय जगन्नाथ प्रीवियस क्लासेस कल रात में डिस्कस करते डिफरेंट टॉपिक नेबे आउ गोटे टॉपिक ऊपर डिस्कस करिया पॉलिटिकल साइंस जो अंडर रे मुझे गांधीयन फिलोसफी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करूथिले तो आज टॉपिक आम कहे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड पार्टीशन चंद्रशेखर आजाद एंड HSRA एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स सब कैबिनेट मिशन हो कम्युनिटिंग इन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पार्टीशन से आप हम डिस्कस करिया क्लास 3 रे आज क्लासेस अगेन प्रणाम प्रणाम समस्त को प्रणाम प्रणाम हिमांजलि प्रणाम हो ठीक अच्छे स्टार्ट करवा आज क्लासेस पे मैंने अगेन समस्त को आउ थे स्वागत सॉरी एटा सॉरी सॉरी एटा गोटे सेकेंड क्लास सेटा तो सॉरी मु हिस्ट्री कथा कह दिली सॉरी हिस्ट्री शेड्यूल अछि इवनिंग रे नाइट रे नाइट रे गोटे सेकेंड गोटे सेकेंड गोटे सेकेंड ओ ठीक अच्छे स्टार्ट करवा आज क्लासेस परफेक्ट आम कहे आज क्लास डिस्कस करबा इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 24 एंड इलेक्टोरल प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज एंड एंटी-डिफेक्शन लॉज ओ ठीक अच्छे ठीक अच्छे अगेन आउ थे स्वागत आज सकाळ क्लास हो पारा क्लास आम जल्दी कवर करवा जयजनाथ सत्यजित हाँ आसीगला पूजारी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द इलेक्शन कमिशन अब समस्त आंसर देते पे मैंने परफेक्ट वेरी गुड परफेक्ट आम कहे आर्टिकल 324 ना नहीं पे परफेक्ट अब परवर्ती प्रश्न को जीवा आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन अरे यार ओडिया एक्सप्लेनेशन मन नहीं और टाइप करियो हो द चीफ इलेक्शन कमिशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस लाइक ए very good perfect Supreme Court judge right? The CEC can be removed only by a procedure similar to the impeachment of a Supreme Court judge right? CEC कहले कौन Chief Election Commissioner right? Perfect how the Representation of the People Act 1950 primarily deals with very good because allocation of seats and delimitation of constituencies RPA 1950 deals with the seat allocation electoral rolls and delimitation of constituencies. The Anti-Defection Law was added to the constitution by which amendment? Anti-Defection ta sabu sangare connected ache every single step of politics polity re connected ache perfect am goje B is the product so 52 tama amendment act right how अरे हे टोटल क्वेश्चंस मिक्सिंग so 52nd amendment act 1985 added the 10th schedule for the anti-defection laws ये रूल नंबर 16 रही हो मतलब क्वेश्चन मन हो जना पड़नी पतला हो जाए क्वेश्चन statement on election commission must answer the statement question पानी टिपी दे पे गोटे सेकेंड सर जूम
ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାଇଁ 2:50 ହେଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। परफेक्ट हो परफेक्ट आम कहूँ ओनली वन इज द करेक्ट आंसर प्रत्युष लगुच कहीं इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग CC under 2 election commissioners. The constitution specifies the exact number of regional commissioners. No, no. कहीं ना because the constitution does not fix the number of regional commissioner है ना नहीं कहीं सभी पढ़ जानते हो which article guarantees adult suffrage for Lok Sabha and Assembly elections. जहाँ सत्यटा आमर भल पिलाटा 326 is the proper answer protest होगा Article 326 provides for the elections to the Lok Sabha and state assemblies on the basis of the adult suffrage जोटा कमी होचे okay the voting age for election was lowered to from 21 to 18 by which amendment act. Very good. Perfect. I'm going to 61st. सत्य तुम सब पूजा पूजी जान तो 61st Constitutional Amendment Act 1988 reduced the voting age from the 21 to 18. Provisions regarding the actual conduct of the election and the elections disputes are in perfect. Very good. I'm going to say Representation of the People Act 1951. RP 1951 contains the provisions for the actual conduct of the election and election petitions disputes. For the 10th schedule of the Constitution contains provisions relating to कौन है सत्य आंसर करनी सतर सब माने सब पूजा जानछ ना केवल गणेश पूजा गणेश एगुड़ा सब जानछ वेरी गुड परफेक्ट हमको एंटी-डिफेक्शन लॉ को है नहीं 10th schedule of the Constitution contains the provisions of the Anti-Defection Law enacted in 1985. Okay. Consider 10th schedule rules the final authority to decide disqualification under the defection rests with the speaker chairman. Defection decisions are completely varied from the judicial review. I guess I'm जानी अच्छा अच्छा रुचि तुम एपट आइट आस नहीं ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे नो इश्यूज जानी टिके टिके जहाँ सत्य प्राउड तुम कहीं बहुत कल्चर आउ ये जिनस को आगू नहीं जाऊँ मैंने पाठ पढ़ा सहित कल्चर को धरिकी चलियाटा बहुत कष्ट समस्ते से जिनस करते ठीक अच्छे मंजरी सॉरी गुरुजी किसी अवस्था नहीं सॉरी माँ को ना धरती सॉरी क्षमा चाहता भाई सॉरी because the Supreme Court ruled it is subject to judicial review. Perfect. Political parties are registered with the Election Commission under very good. बड़ ऑप्शन माड़ हम सत्य हम सब बड़ ऑप्शन धरला हाँ 29A of RPA representation of people act section 29A of the representation of the people act 1951 provides for the registration of the political parties which article bars courts on the interfering in electoral matters.
समस्त आंसर दे पे मो ड्यूटी है पे तुमको रेगुलर 2टा क्लास दबा मुझे दवा कथा देवी लेट हेले भी मुझे दवा कथा देवी पे टाइम जमी मत मैनेज कर पड़ो जोटा मुझे करी Oh, 329 is the correct answer. ठीक है कंफ्यूज होनी कहीं एटा मन रखियो से कहि जे बार कोड्स फ्रॉम इंटरफियरिंग इन इलेक्टोरल मैटर्स माने निर्वाचन मामला रे अदालतर हस्तक्षेप को केउ धारा कोन माने मना करे सॉरी बैर्स कोड बैर्स माने टी माने कोन कहू छै बैर्स माने बैर करबा बा जोटा हम कहू छै मना करबा माने हस्तक्षेप करबा को मना करे बा प्रतिरोध करे बैर्स कोड्स फ्रॉम व्हिच आर्टिकल बैर्स माने प्रतिबंध करे बा हस्तक्षेप करे माने हस्तक्षेप रे रोक लगाए कोड्स फ्रॉम इंटरफियरिंग इन इलेक्टोरल मैटर्स कोड आर्टिकल 329 है ना नहीं पिले हाउ आर्टिकल 329 बार कोड्स फ्रॉम सॉरी बैर्स कोड्स फ्रॉम इंटरफियरिंग द मुझे माने क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट पढ़ियाटा बोल तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बहुत जल्दी तुम प्रॉपर गोटे बेसिक रू जो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी सब कंप्लीट होगा को जाऊँ मल्टीपल टाइम्स हमें प्रैक्टिस करवा 15% प्रोडक्शन 91st अमेंडमेंट कैप्ड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा और स्टेट असेंबली ओके स्टेटमेंट इज क्वेश्चन कंसीडर requirements for a national party recognition समस्त देखिए आंसर देते पे मैंने मोस्टली सबूर सिलेबस पाखापाखि सरवा है मॉडर्न को आसीगला आम मॉडर्न जियोग्राफी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न हिस्ट्री पाखापाखि आसीगला हाँ आम को सॉरी 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 आ गोटे ऑप्शन रही आ गोटे ऑप्शन रही सॉरी सॉरी समस्त आंसर दे पे आउे नंबरिंग कर समस्त नंबरिंग कर दे दियो पढ़ पढ़ क्वेश्चन पढ़ बुझ बुझ आंसर स्वराज डी नुहे सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे जो मैंने बोथ 1 and ठीक अच्छे winning at least 2% of the seats in Lok Sabha from the at least 3 different states and securing 6% of the valid votes in 4 states in general elections. Perfect. Both conditions are valid criteria for recognizing a national party in India. Other election commissioners can be removed from office upon the recommendation of very good very good I'm going to chief election commissioner perfect how पर प्रश्न को जीवा the model of conduct by model of code of conduct जोटा काम जे comes into operation केते बेले जो code of conduct जोटा काम कोन होचे आचरण विधि लागू है ओडिया रे जो हमें कहचे आदर्श आचरण विधि केवटर कार्यकारी हुए from the date of the election schedule is announced perfect the model code of the conduct comes into the operation immediately once the election schedule is announced by the election commission of India consider the statement on the election commission's functions 1517 में अच्छे very good समस्त आंसर दियो perfect Suraj very good I'm going to both 1 and 2 कहीं it determines the territorial areas of electoral constituencies very good perfect अच्छी it resolves disputes relating to the splits or mergers of the recognized political parties ठीक अच्छे no issues both ठीक अच्छे
Post correct function of the Election Commissions of India. Which article empowers the Parliament to make provisions regarding the elections to legislature? How some answer video? Satya kuade gala? Satya feral. Very good. I'm going to say 327 is the pronounce of author's closure. Okay. 327 empowers the Parliament to make provisions with respect to elections legislatures for the delimitation commission. Delimitation commission is appointed under an act of which? Parliament. No, Parliament. प्रणाम सब हाँ पार्लियामेंट पे मैंने मन रख ठीक अच्छे हाँ पार्लियामेंट कहीं कहे कहला सीमा निर्धारण आयोग क्यों आईन अधीन गठित हुए पार्लियामेंट अंडर ठीक अच्छे द डेलिमिटेशन कमिशन सेट अप अंडर द एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एनेक्टेड आफ्टर एवरी सेंसस है ना नहीं हो कौन सा स्टेटमेंट ऑन द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 perfect I would say both 1 and 2 is the perfect answer honey very good how thank you to introduce the 10th schedule yes it is it exempted splits from the disqualification of if a group of 1/3 legislation split anti-defection law mana poduchi both set are correct historically regarding the original 52nd amendment provisions এইটা বুঝ তো 1520 ର সেকেন্ড টা মু দুইটা বুঝাই দଉଛି ঠিক আছে খালিটা সুটিলা का सोडा होते हां इट इंट्रोड्यूस द 10th शेड्यूल अंडर कोन कोन जाଉଛି पिला माने फास्ट मने पकाओ 10th शेड्यूल अंडर कोन कोन जाଉଛି बुझो फास्ट हमको बुझीबार अच्छी 10th शेड्यूल अंडर रे आम कहूचे फास्ट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन अच्छी 1985 इंट्रोड्यूस द 10th शेड्यूल जोटा आम कहूचे हाँ ना जोटा आम कौन कहे एंटी डिफेक्शन लॉ फास्टा कहली तुम मानक बुझीपार हाँ ना एंटी डिफेक्शन जस्ट टिके पूर्व तुम कहूली हाँ दल बदल वेरी गुड तब यहाँ कौन करे जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ कौन कहे डिफेक्शन ठीक अच्छे तापर कहला 1/3 स्प्लिट एग्जेम्पशन इनकरेक्ट एबेका टाइम रे कहीं ना गोटे यहाँ फंक्शन होनी ओरिजिनली 10th शेड्यूल माने कौन कौन सब अच्छी एक्सेप्शन अच्छी माने स्प्लिट छोटा ताकू एक्सेप्शन लगा है पैराग्राफ 3 रे स्पेसिफिक ठीक अच्छे स्प्लिट कहले कौन कहे आम कहे 1/3 रु कम न होगा दरकार ठीक अच्छे ठीक अच्छे माने गोटे लेजिस्लेचर पार्टी रो डिस्क्वालिफिकेशन को अवॉइड करबा को हेले 1/3 रु कम न होगा दरकार हाँ एबे मोस्टली आम कहे मर्जर जोटा एक्सेप्शन हो जाए कौन 1/3 टा एटा रिमूव हो जाए जो 1/3 एटा ना तुमको कोटा कहूली हाँ यहाँ स्प्लिट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इफ ए ग्रुप 1/3 एटा 1/3 टा एटा मु मन ना एटा पुराना मु बुक गोटे बनी क्वेश्चन तो 1/3 दे दीची एटा 1/3 हटी की सेकंड थर्ड हो जाए करंट पोजीशन जोटा सेकंड थर्ड हो जाए बुझ पाइल
ना बुझी पाइलेनी बुझी पारंती को मु बुझी दउछ अत्र ठीक अछि बुझ आम जाचे फास्ट आसीला आमर 52तम संविधान संशोधन जोटा कहছে अमेंडमेंट एक्ट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ आसीला ठीक अछि एटा जो सेकंड ऑप्शन जोटा अछि से कोन कहला 1/3 माने मेंबर्स जोटा कहছে से जो स्प्लिट माने माने कहि परिबो फास्ट 1958 रो जो 10th शेड्यूल स्प्लिट थिला ठीक अछि स्प्लिट थिला सीटा हमें कहूचे सितरे कोन मेंशन थिला अति कम रे माने 1/3 सदस्य माने अलगा है कि गोटे नूतन दल बा गोष्ठी गठन करि परथले ठीक अछि ताहले कोन हमें कहि परिबा से माने दल बदल पई माने जो जो एंटी डिफेक्शन लॉ लागुथला माने जो अयोग्यता रो माने ताको बंचीबा माने ताको जो अयोग्यता हे उतर काहे के जो लॉ लागुथला ताको ऊपर तो छाड़ मिलुथला बा छाड़ पाई जाउथले समान ठीक अछि किंतु 91th जोटा कोचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसीला 2003 रे ठीक अछि 91th 91th जो अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट आसीला सेतरे कोन हला जो 1/3 स्प्लिट टाकू हटई दिया गला ताकू हमर कोन करा गला 2/3 करा गला ए जो 1/3 टा अछि ताकू 2/3 करा गला ठीक अछि मॉडर्न हमें कहूचे मॉडर्न अनुसार 2/3 करा गला बुझि पल्ला माने ए जो हां वेरी गुड परफेक्ट एबे बुझि पाइल रोजी परफेक्ट बुझि पाला तो बुझि पाला तो क्लियर एबे ए क्वेश्चन हिसाब रे एटा काहे की ठीक हबो एठी हमें पचारि छी जे consider the statement on 52nd amendment act 1985 हमें आ कथा पचार छी हमें कहिनी जे जो 91 तम जो ये जो अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट एक्ट कथा पचारनी जेहेतु पचारिनी 52nd अमेंडमेंट हिसाब रे एटा ठीक अछि एटा भी ठीक अछि माने नै जे जदी पचार थांता 52nd एंड बोथ कौन को जामे 91st दीटा पचार था देन हमें कौन कहतंते सेकंड ऑप्शन टा भूल ही जाइतंता काहे कि ना हमर सेकंड थर्ड नहंती ना नहीं परफेक्ट क्लियर समझते वेरी गुड क्लियर समझता परफेक्ट ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अपडेट करिया हां सबले क्वेश्चन पढिबो केयरफुली ओके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन हाँ इनिशियली पचार सी प्रॉपर्ली मेंशन करी जी सी अमेंडमेंट कथा तो सी अमेंडमेंट कथा ही हमें डिस्कशन करबा हमें मॉडर्न अमेंडमेंट कथा कहितले हमें जाई परतां गोटे सेकंड पे आंसर होता वेरी गुड आम कहूँ नॉर्थ पार्पुर इन केरला परफेक्ट प्रश्न को जीवा ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 ड्यूरिंग द नॉर्थ पार्पुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन इन केरला oh VVPAT voter verified paper audit trail was first introduced fully in Lok Sabha election in क्यों समय
सब 9 ଦେଇଛ ନା 19 ଦେଇଛ? 19 ଦେଇଛ। ମାଡ଼ ହବ ତମ ମାନ ଉପରେ। 9 ଦେଇଛ ନା 19 ଦେଇଛ? 19 ଦେଇଛ। प्रणाम प्रणाम सोनी। 19 हब। VVPATs were deployed across all 540 parliamentary constituencies in 2019 general elections. बुझिपेला? तुम सत्य भाई फेरार हो मझे मझे सत्य फेरार होते माछ धरिया पड़े अंडर आर्टिकल 325 देयर कैन बी हाँ सीटा 2019 हम कहीं ना आम कौन कौचे जो ईवीएम सहित जोड़ा होता गोटे कौन व्यवस्था होता माने ईवीएम सहित गोटे नुआ फीचर्स गोटे व्यवस्था जोड़ा जाता जहाँ को आम कौन कौचे जो माने वोटर्स माने मतदाता माने माने जो प्रार्थी गुड़ाक सब थे जो माने इलेक्शन लड़ू थे ठीक अच्छे भोट देते ठीक अच्छे माने नाम बा सिंबल थी पेपर स्लिप किसी सेकंड पे देखिबार सुजोग दिया जाए ठीक अच्छे जो स्लिप पेपर स्लिप दियंती गोटे है ना नहीं अच्छा अच्छा ठीक है सत्य मुझे माछ धरिया देच तेईस नंबर प्रश्न को जीवा सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस परफेक्ट प्रश्न को जीवा ओके concept of a nota none of the above option was first introduced in India following a Supreme Court judgment in recently बिहार जो इलेक्शन होती से जानी 2200 भोट पाखापाखि जाइए नोटा को वेरी गुड 2013 इज द प्रोट आंसर प्रशांत जीती गले नहीं अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द नोटा ऑप्शन इन लैंडमार्क पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL जोटा नहीं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया case in 2013 under the 10th schedule an elected member joining another party voluntarily in course disqualification from the house है ना नहीं very good voluntary giving up membership of one's political party leads to the disqualification under the Anti-Defection Law. Under Article 327, who has the power to make provisions regarding the elections to state legislature? Very good. Parliament is the correct answer. नहीं Parliament. Article 327 empowers the Parliament to make provisions with respect to elections to legislature. 337 धारा अनुसार संसद विधानमंडल निर्वाचन संबंधी आईन प्रणयन करे the statement regarding the elections commission election commission जोटा कुछ प्रणाम 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 पूजा वेरी गुड ओनली वन इज द प्रोट आंसर प्रत्युष्ट बोलियो से पहले कहीं कि इलेक्शन कमिशन एंजॉय द सेम सैलरी एंड पर्क्स एज सुप्रीम कोर्ट जजेस चीफ इलेक्शन कमिशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट डिस्क्रिप्शन विदाउट पार्लियामेंट्री इनपुट नो इट विल बी लाइक इम्पीचमेंट आज सुप्रीम कोर्ट जज है ना नहीं Student who is incorrect because the CEC requires an impeachment like parliamentary procedure, which article empowers the state legislature to make provisions regarding the election to their houses. Good afternoon, Devras. समझे खाई गए सत्य कहब ना सत्य कह समस्त खाई गए ना खाई पी शोक आसते केत शोक तुम इधर आसला सत्य कह शोक उठिक आसला
Article 328 empowers the legislature of the state to make provisions with respect to elections to such legislature. Who is officially responsible for registering political parties in India? Museveni, acha. हे भगवान सत्य खाली गवर्नमेंट मारियो इलेक्शन कमिशंस ऑफ इंडिया Election Commissions of India register political parties under the under the section 21(9)(a) Representation of People Act 1951 under 91st Amendment 2003 what the proportion of legislature must agree for a party merger to avoid defection ei setabole pachartili pele mane kete pachartili 52 na 51 pachartili 50 ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ସେଟା ଅଲଗା ଏଟା ଅଲଗା 91st ଅଲଗା ଏଟା ଅଲଗା ହଁ ନା ନାଇଁ ହଉ 2/3 ନାଇଁ ପୂର୍ବଟା କୋଉଠି କେତେ ଥିଲା ପୂର୍ବଟା ଭେରି ଗୁଡ୍ परफेक्ट 52nd amendment अंडर थिला ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା 52nd ଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ 1/3 ଥିଲା 1/3 କୋଉଥିରେ ଥିଲା 52nd କଥା ଦି କହିଥାନ୍ତା ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ 1/3 ଥାନ୍ତା ଯଦି 2/3 କହିଛେ ମାନେ ତାହେଲେ 95 ମାଡ଼ ହବ सोनी बुंगु को पिटे दिटा बसै दे हौ और कौन सा 10th शेड्यूल रूल्स पॉलिटिकल ऑनर्स पिला गाड़ी गोटे बाहर जीवनी तो सोनी हला पॉलिटिकल ऑनर्स हाँ समस्त आंसर दे दियो कोटा एंड कुछ पहले अच्छा अच्छा वेरी गुड कोटा है ये कोटा अरे ये पूर्वटा था हाँ बहुत ठीक अच्छे nominated members are disqualified if they join a political party after 6 months perfect independent members are disqualified if they join any political party post election perfect both statement are correct under rules under the Anti-Defection Law 10th schedule जोटा काम कोचे है Article 325 prohibits electoral rolls on the grounds solely of परफेक्ट रिलीजन रेस कास्ट सेक्स जातिगत भेद रही परिबो नाही परफेक्ट हु सर्वड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वेरी गुड परफेक्ट आम कुछ कॉन्सेंट इज इंपोर्टेंट फॉर प्रश्न बुझिबा और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ओके स्टार्ट ऑन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचरण विधि ऊपर समस्त देखि आंसर दो स्टेटमेंट
Very good. Perfect land. Okay. Next question. 1 to 2 is the correct answer. Oh, so color statement 1 is correct. MCC lacks directly statutory backing. 2 is sorry. Perfect. When did the election commission become a permanent multi-member body? Very good. No. सुरजली सोनी माड़ खाइनी गाड़ी खाइनी मु एका खाऊची तमे ही खाइबो से छुआ पिला तमे बड़ पिला 1993 पूजा भूल कहीं की इलेक्शन कमिशन बिकम ए परमानेंट मल्टी मेंबर बॉडी इन अक्टोबर 1993 मन अछि ना नेबा in which year was VVPAT first used experimentally in an assembly election? देवराज बाड़े दीचंती सुरज सहित oh perfect A is the correct answer आमे बोचे perfect पिला माने 2013 हां नहीं VVPAT was first used experimentally in Noksin Assembly constituency in Nagaland in 2013. On the 10th schedule, the decision on the disqualification due to defection is made by मुकली देवराज स्वराज सहित आंसर पिटी दीजन स्वराज भी तळे क्या कहितला से आंसर तमे कहि दिछो स्पीकर ऑफ चेयरमैन इज द करेक्ट आंसर प्रश्न होची बा स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ द हाउस मेक्स द डिसीजन ऑन द डिसक्वालिफिकेशन अंडर द 10th schedule perfect consider state election commission SCCT conducts election to panchayat and municipalities state election commission is appointed by the president of India statement समझते दीजिए अच्छा से कौन कही स्टेट इलेक्शन कमिशनर कही से कहनी जे इलेक्शन कमिशन कहनी स्टेट इलेक्शन कमिशनर क्या द्वारा अपॉइंट होती गवर्नर को द्वारा अपॉइंट होती वेरी गुड हाँ ठीक है अंडर आर्टिकल 324 रिमूवल प्रोटेक्शन इज एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड टू Oh, very good. What a second below. The luggage medicine खाएगा पूरा. निद्रा आकर भांगियाला चाहना चांस पड़ेगा हो ठीक है 1549 प्रश्न थे चीफ इलेक्शन कमिशन ओनली जोटा हम कहूचे हो only the CEC is granted explicitly removal protection akin to a Supreme Court judge under the Article 3.24.5. How many states must a party be recognized into a qualify as a national party? ना रे देह केतळे भलो होची देह टिके भलो लले पुणी खराब हे काली संध्या बेले जाईची खेलिबाकू वर्षा गाळीला पुणी ओदा आइके आसली चारटा स्टेट है सबरांस a political party must be recognized as the state party in 4 states to be a national party.
ଯେମିତି ଏଇ ଗେମ୍ଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ ଖେଳିଛି, ଏଇ ଗେମ୍ଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଖେଳିଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟି ଖେଳିଛି? आम आदमी पार्टी, हाँ नहीं, वेरी गुड. Disqualification for voting against party whip unless condoned must happen within. ଆପଣ को ବହୁ ଥିଲେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ ନା କ'ଣ କହିଲ ବୁଝିପାରିଲେ? କୋଉଠି ଥିଲେ ନା କୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ? ନା. ହଉ, this is the correct answer. On the test answer for speed of javelin. How voting against party directives result in disqualification unless condoned by the party within the 15 days. Consider the voter registration rules. The minimum age for voter registration is 18 years. नहीं काली मुझे काली कथा कहली मु कहली एबे रिसेंट को पार्टी गोटे नेशनल डिक्लेयर हैला जो आम आदमी पार्टी से मेथड को किए आपण की आगू आसला आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ओडिशा गुजरात फुजरात सब लगे पंजाब लगे आसला ना both 1 and 2. Both statements are correct regarding the voter eligibility is control over electorals. Delimitations. Commission's final orders can be challenged in court of no court of law को चाहे how Delimation Act to specify that the final orders cannot be called in questions in any court. Article 329P requires election disputes to be challenged exclusively through ठीक बढ़िया है सारी मुझे जानी प्रशांत जीतले बड़े बहुत बढ़िया है प्रशांत सर. इलेक्शन पिटिशन इज द प्रोट आंसर. प्रश्न को जीवा गाड़ी पड़ो 329B कही रिक्वेस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स टू बी चैलेंज्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू election petition. Article 329B mandates that the election can be challenged only by an election petition presented to authority prescribed by the chief electoral officer of a state is appointed by समस्या देखिए आंसर देला टिके भल से पढ़ पे मैंने कौन कही स्पेसिफिक पढ़ तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ECI इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पूरा. आर्टिकल 324(6) माने हिसाब रे हमें कहूचे प्रत्येक राज्य एवरी स्टेट रे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बा सीईओ को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही नियुक्ति करांती. किंतु गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो समस्त पे माने डायरेक्ट नियुक्ति होंतनी राज्य सरकार को सहित कथा हेबे. ठीक अच्छे प्रस्ताव देवे प्रस्ताव दे सारा अधिकारी जो सब अधिकारी अच्छा सब से कथा है माने क्या जन को ECI रे कौन ECI रखिए स्टेट गवर्नमेंट को सह कनसल्ट होगी. ठीक अच्छे हाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन 91st Amendment Act 2003
सी सत्य फोन टा चार्ज बसई देली चार्ज नथिला तमन क्लास नहीं सला पर सुई पड़ी पर टुंकी सुई पड़ी both 1 and 2 is पड़ा सोई भी कोन खेले उतर टकी सब पर हो post statements are correct 90% I will remove the 1/3 split rule while retaining the second third merger rule perfect when where the first general election held in the independent India very good first general elections in independent India were held between the October 1951 to February 1952 electoral trust scheme for political funding was notified by very good CBDT Central Board of Direct Taxes on Article 324 2 the strength of election commissioners is fixed by President of India नहीं proxy voting in India is legally permitted for भारत रे कहा पई proxy voting व्यवस्था अनुमोदित सर्विस वोटर्स बा आर्म्ड वोटर्स नहीं आर्म्ड फोर्सेस सॉरी आर्म्ड फोर्सेस proxy voting is legally permitted for service voters belonging to the armed forces under which article does the election commission advise the president on MP disqualification very good 103 is the correct answer plan प्रत्यक्ष गाड़ी गाड़ी सुनिबो तमन सब गाड़ी सुनिबो सुनी 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 संगे संगे डिलीट कर दो ना oh perfect oh also statement on the state election commission of the statement मत सत्य है खिचड़ा खिचड़ा सत्य both 1 and 2 perfect so statement are correct under the article 243k and 243 the election symbols reservation and allotment order was promulgated in which year very good perfect the election symbols order was promulgated by the election commission in 1968 sorry who determined the election campaign expense limit for the parliamentary candidates भल से पढ़ा पिले माने क्वेश्चन टी भल से पढ़ जानी परिबो सन्नी चला पड़ीगला 1601 मत गला सेंट्रल गवर्नमेंट आम कहूचे से कौन कही सांसद प्रार्थी निर्वाचन खर्च who determines the election campaign for expense limit for the parliamentary candidate
भगवान सत्य अरे शुण सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं कहे इलेक्शन कमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे कौन थाए आम कहे इलेक्शन कमिशन आ सेंट्रल गवर्नमेंट माने दीटारे कन्फ्यूज हेनी फास्ट कि पार्लियामेंट सहित भी कन्फ्यूज हेनी कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे पावर अच्छी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 अंडर जो सेक्शन 77(3) अनुजाई आम कौन कहे जो जो मैंने सब निर्वाचन खर्च जहाँ सब हम ताकू किए सब माने निर्धारण करेंगे जो गोटे टाइम डिसाइड हो ये टाइम भितर माने एतिकी अमाउंट माने खर्च हम एतिक अमाउंट आवश्यक गोटे आनुमानिक दिज्व से जो गोटे लिमिट अच्छी से जो रूल ऑफ जोटा आम कहे रूल 90 जोटा आम कहे तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 এটা सब लेखा है कौन करवा से तो नियम आ एक्सपेंस लिमिट रूल 90 जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट पाखर अच्छे अरे तुम कहो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी से केमी अदर पार्टी विषय डिसाइड करेंगे ना सेमती किसी ना से निर्धारण है कि अच्छी आनुमानिक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोटा जो तार माने ताकू मॉनिटर करिवो माने खर्च रोटे लिमिट बा गोटे सीमा तो मॉनिटर करिवो एनफोर्स करिवो करके कौन प्रार्थी माने केमती सब निज निज सब खर्च हिसाब रे माने मोर एति खर्च हिसाब रखिबा ये सब जिनस कौन ताक सब रिपोर्ट करके पढ़िबो माने सब रिपोर्ट देबे समस्ते तब ये ताकू रिपोर्ट किए पढ़िबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से हिसाब रे ताकू डिसाइड करिवो के इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ताहले चेक करि परिबो पिला माने क्वेश्चन वैलिडिटी कोन करबा द गवर्नमेंट नोटिफाइज द एक्सपेंस लिमिट अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द आरपीए 1951 गुड आफ्टरनून जोहार जोहार श्रेय हो अंडर द 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ 1555 नंबर प्रश्न एम अच्छे वेरी गुड also involving at least 2/3 of a party legislature exempts them from the disqualifications okay anti-defection speaker role anti-defection speaker role statement very good Soras perfect हारीगली हाँ हाँ से कथा कहे राघव छोटा नहीं पड़े 2 is incorrect because the Supreme Court ruled it is subject to judicial review. Article 326 of the Constitution relates to which very good adult suffrage अरे ये कौन बा the chief electoral officer of a state is appointed by और स्पीड ऑफ पे मैंने जल्दी आंसर तो 100 सेकंड स्किप कर दियो समझते इसी पर एक आंसर देथिलो इसी एबे आंसर दे नथिलो chief electoral officer of a state is appointed by the election commission of India. Political parties are registered under the which section of Representation of People Act 1951?
Section 29A is the part answer. Section 29A of the Representation of the People Act 1951 provides for the party registration. Which section RP 1951 defines the corrupt practices during the elections. Pranam Jai Jagannath Shivani. Very good. Article 1, section 123 is the proper answer. Section 123 of the RPA 1951 defines the various corrupt practices during the elections. Best question CC removal upare statement is. So very good. 9, both 1 and 2, removed by President on Parliament address, requires special majority. Pranam, Jagannath Chike, Pranam. How? Both statements are correct regarding the CC removal process. What is the tenure of office for the Chief Electoral Commission, Election Commission? Very good. On the Subhasana Prashna, perfect. Number this is the problem. 65 years. Perfect. When was the Election Commission first made a multi-member body? Very good. Perfect. 1989 is the program for the oh. What's the treatment criteria for national party? Who misses Konani? Who misses Kota Sveni? ମୁଁ କହିଛି ବା ଶିବାନୀ ତ ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଲ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଛି ପରା ତାହେଲେ ଶୁଣିନ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଆଉ both 1 and 2 is the ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସେଟା core condition for national party recognition by ECI conviction for which offense under RPA 1951 results immediate disqualification. कौन तो मन से मैसेज कर दे कि डिलीट भी कर दो तो मुझे जानी पानी
हो परफेक्ट प्रश्न को जीवा ब्राइबेरी एंड इलेक्टोरल करप्शन जोटा हम कहे ब्राइबेरी कहले कौन कौन ब्राइब बा how election petitions challenging parliamentary polls are tried by very good perfect ठीक है परफेक्ट परवर्ती प्रश्न को जीवा ओके बीच द प्रोग्राम से हम कुछ हाईकोर्ट समस्त जानी छे आर्टिकल 24 provides for the appointment of 75 प्रश्न हम पछे परवर्ती प्रश्न को जा स्पीड अप जीवा लेट राणी मु टिके सोई थांदी regional commissioner is the proper answer परवर्ती प्रश्न को जीवा very good article 324 provides the appointment of regional commissions to assist the ECI was the statement of 91st amendment 2003 कौन डीपी मु बुझी पारन माने मते टी कोन को मु जाने टिके both 1 and 2 is the correct answer for this one. Both statements are correct. The 91st amendment abolished the split rule and capped council size to 15%. Under the RPA 1951, a by-election to fill a casual vacancy must normally be held within अरे मते टिके कौन सो कहि के चलछो मु जानि पारन 6 months is the correct answer. अच्छा ठीक है 4 पे 1951 request a casual vacancy to filled by election within 6 months of its occurrence. What is the security deposited for a general candidate contesting Lok Sabha elections? लोकसभा कही लोकसभा सन्नी माड़ा खाइब सन्नी टिके बों को पाखक जाओ बो पिठे दुईटा बसई दे perfect I'm going to say 25,000 is the right answer but consider the statement on delimitations commission ना ना कुछ तो है तुम खतरनाक डीपी भी कहू मु जानी पारनी मु जानी पारनी बोली तमाने मते कहून हारीगली हारीगली only one is the correct answer for those two kuchiba statement 1 is correct statement 2 is incorrect because the delimits order can be challenged in any court the model code of conduct बा जोटा हमें कहू आदर्श आचरण विधि enforced by whom परफेक्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कौन सुनी कहते खाली माड़ा देवे कहते कौन कह पॉलिटिकल पिला ही तमते भूल कह पॉलिटिकल A nominated MP can join a political party without eviction penalty within
Actually, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲି is the broad answer 6 month is the broad answer ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି how election expenses accounts must be filled by candidates within how many days of results ଆରେ ଆସିଲି ଯାଇଥିଲି ବୋଉ ଆସିଥିଲେ ତ परफेक्ट आम कहे 30 डेज आम समस्त जाचे भूल जे कर आंसर टी दे दो मु तो कही सारे आंसर candidate must lodge their election expenses accounts within the 30 days of the declaration of results. Article 325 of the Constitution ensures that no person is ineligible for electoral rolls on grounds of सब भूली भाली गलानी पुणी हो परफेक्ट प्रश्न को जीवा what article 325 prohibits it how under RPA 1951 hiring or procuring vehicles for voters conveyances perfect corrupt practice 123 of RPA classifies hiring procuring vehicles for voter conveyances as corrupt practice constitutes state party recognition criteria winning 3% of the total assembly seat or at least 3 seats securing 6 valid votes in assembly polls plus 2 assembly seats on the 77 प्रश्न Very good. Both 1 and 2 is the right answer. Which article empowers Parliament to make a provision regarding the election to legislatures? Article 327 is the right answer. Under 10th schedule para 5 a member chosen as a speaker is exempt from defection if they voluntarily give up and do not rejoin their party. Section 8(3) of RPA 1951 describes disqualification of the conviction with imprisonment for very good 2 years or more. Section 8(3) describes it. Okay, the chief election commissioner and other EC's amendment conditions and term act was enacted in very good 2023. Chief Election Commission and other Election Commissioners Act was enacted in December 2023. The expression corrupt practices during the election is defined under RPA 1951 in perfect section 123 is the right answer. Very good, Satya. Excellent. Electoral trust scheme for political funding was notified by very good Central Board of Taxes. Article 324(6) empowers the president to make available to ECI such staff as necessary for very good discharge of functions conferred under Article 324(1).
What is the minimum vote share in assembly elections for state party recognition? Very good. Perfect. 6% is the correct answer for those notes. Article 324(2) states that the election commission shall consist of CEC. Very good. So as a member of the other ECs as the president may fix. Article 324 states that the commission consists of CEC and such other ECs as fixed. Chief. How? Election commissioner normal as fixed by the president from the time to time. On the 10th schedule, a nominated member is disqualified if they join a political party after perfect. I'm going to 6 मास. Very good Sunny, appreciated. Section 77 of the RPA 1951 mandates every candidate to maintain an account of Puja Gaya. Election expenses, perfect. When has the election commission made a permanent multi-member body of law? Very good. 1993 is the correct answer for this one. How? The model code of conduct enforced by the ECA derives its primarily direct legal backing from very good. Article 324 implicitly and consensus of parties. MCC lacks direct statutory backing and operates via ECA's modal authority under Article 324 and political consensus. Article 329B bears माने कौन करची प्रतिरोध करिबा विरोध करिबा courts from interfering in election matters except through election petition. The entire and very enter or disqualification for the defection does not apply. A party merges and how many members agree? Perfect. I'm going to 2/3 How? Merger requires at least 2/3 of the parties legislature are to be exempt from the defection, which body resolves disputes relating to the splits or mergers of recognized political parties. 1593 প্রশ্ন রয়েছে। Very good. Election Commission of India is the correct answer for those no Section 29A of the RPA 1951 deals with just टिके पूर्व कहिछि गाड़ी गोटे बाहर जीवनी गाड़ी गोटे बाहर जीवनी गोटे गाड़ी बाहर जीवनी
Very good. Registration of the political parties. Oh. VVPAT was deployed across all 543 parliamentary constituencies for the first time in very good. I am going to 2019 is the correct answer. VVPAT was fully deployed across all constituencies in the 2019 general elections. The 61st Constitutional Amendment Act 1988 reduced to voting age from the 21 to very good. I am going to 18 years is the correct answer. 61 Amendment Act reduced the voting age from the 21 to 18. Who appoints the Chief Electoral Office of a state? 1997 question आमेथिले Election Commission of India. Perfect. Chief Electoral Officer of a state is appointed by the ECI in the consultation with the state government. Article 24 vests one vest with the superintendent's direction and control of elections in very good election commission. Perfect. Article 24 one vest superintendent's direction and control of elections in the election commission. The maximum age limit up to which a CEC can hold office. Very good. 65 is the correct answer for this. Oh. Under Article 326 elections to Lok Sabha, and the state assembly shall be on the basis of last prashna. Yes or no? Third, universal adult suffrage is the correct answer for this. Okay, again thank you so much. Expect करूची आज क्लासेस मे भी लेट हे गला किछि पर्सनल प्रॉब्लम्स रहूची सेति पे मु क्लासेस गोटे दिन लेट हे जाउची नॉर्मली बाकी सब दिन ठीक ठाक चालूची. Again thank you Ram, thank you all, thank you Amit, thank you Pooja, Soni, Devraj, Niharika, and thank you all. Thank you. जगन्नाथ सारे सेशन बंद होत रजनी शुभ अपराह्न पेले माने आई होप तुमने एंजॉय करथिबो क्लास को जति क्लास भल लागतो निश्चित भाव वीडियो को लाइक एंड शेयर करियो बोली माने थैंक यू सो मच तुमको शुभ अपराह्न पेले जाओ कि खेल कूद करियो था खेल कूद कर नले जहा करियो त जे करबो जे बुलिबो कि खटी मस्ती करिवो सत्य सत्य को मेसेज देखि पुणी आसली मुझे हूँ माछ धरी हे भगवान सत्य खाली कहले माछ धरी कि बन्या हेछि तांकर खाली माछ धरी कहू सत्य खाली कहला माछ धरी केरांडी माछ धरवे आ बन्या बात्यारे आ कोन माने शेउळ माछ आसिकी नले चितळ माछ आसी पहरिवे घर सामने रे सिंह खाऊ तुम सिंह आम एपटे खाती ना कि भुवनेश्वर टाउन फोन सिंह खोजिक खाती गाँव में कि घृणा करती सिंह माछ आम कि खाती एपट एरिया
ଖାଇଲେ ପାଠ ହବନି। ହଁ ସୋନି ବି, ଆରେ ସୋନି ଭେଜିଟେରିଆନ, ସୋନି ଆମ ଦଳର। ଚିଙ୍ଗିସ୍ ଫ୍ଲାଏ ଖାଇବ ଆଉ, ଚିଙ୍ଗିସ୍ ଫ୍ଲାଏ, ଫ୍ରାଏ ସରି ଫ୍ରାଏ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲେ ସାରିବା କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରିବା, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଆଉ କଣ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ସତ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବେ, ସତ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବ ଯଦି କୁହ, ମୁଁ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି। ସାର୍ କଇଁଛ ବିରିୟାନୀ, ଏ ଭଗବାନ କାହିଁ ଶାକାହାରୀ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦଉଛ ଏଭଳି ସବୁ ଶବ୍ଦ। ହଁ ଶିବାନୀ, ତମେ ତ ନନଭେଜ ବିନା ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତମ ମାର୍ସା ଘାଇ କଲେଜ ଆଗରେ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ନନଭେଜ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୁପଚୁପୁଠୁ ଚାଟ୍ ଯାଏ ସବୁ ଠେଲା ଗାଡି ଖାଲି ଭେଜ ର, ତମେ କହୁଛ ନନଭେଜ ଖାଇବି ମୁଁ। ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ବାଲା କରୁଥିଲା, ସେ ତ ଆଉ ତା ଦୋକାନ ବି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ଯିଏ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ମୁଁ ଦେବି, ମାନେ ଲିଙ୍କ ଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ, ଲାଇଭ୍ ଜଏନ୍ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୀତ ଗାଇବ। ସୁଇଟି ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ କି? ସାର୍ ମୁଁ ଗାଇବି, ଦେବି ଲିଙ୍କ ଦେବି, ଲିଙ୍କ ଦେବି, ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ଗାଇବ ଆସିବ। ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଦେବି। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ରାମଙ୍କର ଆସିଲେ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, दया, दया मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। नहीं जो गीत हेଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବେସୁରା ନ ହବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେବି, ତମେ ଆସିବ, କାହିଁକି ଲାଇଭ ରେ ବୋଲିଲା ମାନେ କି କୋଉଠି ଆସିଥିବ ଲାଇଭ ରେ, ସେ ଫଟୋ ହେଇଯିବ ସେଇଠି, ମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଯିବ ତାର, ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇକି ସେ ଚାଲିଯିବ ଏକାଥରେ।
जदि समस्त सहमत दब ताले मु गूगल मीट लिंक देवी समस्त सहमत भोटिंग टाइम भोटिंग टाइम ना कोचर कौन के बैटिंग करे तुम देखी अच्छा जहा तमाने कहूच ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲି ହେଉ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଗାଇବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡେଥ୍ ହେଇଛି 3000 ନେଇ ମରିଗଲା ଆତ୍ମା ଉଠି ଆସିଲେ ଧରିକି ମାଗିବି ନା ମାରିବି ସ୍ୱରାଜରେ बदमाश पिला को ये मना करे नहीं समस्त जॉइन करियो को हम लिंक देबी आलो सी सेमिति आ कहि दे कि समस्त के जॉइन करबेन ईश्वराज कहलानी मु रेडी वोट आ कि सब वोट दउछ समस्त वोट देले से सर जीवागु ए देवराज वोट देले आउ के वोट दउछ दियो जेके सोनी देवराज वोट देइचंती ठीक अछि मो टाइटल सम बोलियो ए सत्य कहले मु जाउछ माछ धरि तांकर माछ धरिया कथा चिंता करले हे शिवानी आउ कि सब रेडी पूजा पूजा फेरा पूजा गुडाक पूजा बोलियो गीत सत्य बा गाई था कौन स्वराज कहले सांग के 3000 खाई मरी जाइछंती से पुणी समाधि उठे मागिबे पैसा ना ना मु जमा गाइबी जमा नुहे हारिगली आज्ञा हारिगली मु बोली माँ देइथिला कजल गार मत किसी आसनी मोर टैलेंट नहीं इंडिया गॉट टैलेंट रे ताले जाय पड़े तुम स्टार्ट करियो आपण मु कहीं मु की कथा मते कहीं पसोच रे मु कहीं स्टार्ट करिवि की कथा मते कहीं पसोच रे की कथा ना 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 अपन फंसेगा नहीं अपन इससे पिघलता नहीं मु कहीं फसीबी मु कहीं की फसीबी मु मार्केट चली ए जेके चलले जेके फेरा जेके ऑन मिशन
जे कि मिशन कहा गोटे धरिके बुहे मारी ठीक ठीक नो वाला देखी नो वाला देखी आज ना कल देखी गोटी येस कहला जो इंस्टाग्राम ये ऊपर येस कहला सत्य सत्य गाइबे अफगान जले भी सत्य गाइबे ट्रम्प वाला मस्त थी कौन से कहती मन पड़नी से कौन से गोटे एपिसोड था निश्चित निश्चित वर्षा वर्षा गाइब नो प्रॉब्लम ठीक है पहले सारी दबा ना कौन कह तुम तो कुछ कहल ना हाँ मुझे देखे सनी डाई हार्ड फैन मोटे बहुत पुराना ये बेकार नुहे ये जो जुजुत्सु काइजेन देखी डेउछन्ति पिला 2012-13 एनिमे देखी देखी आस 12-13 नो सॉरी 12-13 सॉरी 16-17 आड़ 16 तो मुझे स्टार्ट कले देखा शक्ति भाई खोर्धार सुमन सुवंदित सुंदरी सत्य पड़े गए माछ धरी गोटे गीत बोलते आम जीव कौन कौन सब माने डिमांड करुछ जो लेवल मु बोली पारिनी पिला आई एम नॉट कैपेबल करवा टाइम हेले सब करवा नहीं मु गाऊनी थाओ मु सारे प्रिवियस सेशन से गीत नु स्तोत्र तो मु कंप्लीट जानी छी आउ 6 इयर्स पर मीट अप देव सुपूजित सॉरी सॉरी मो माइंड तो चालू तो मो ऑटोमेटिक माइंड गीत बोलती हठात बोली दिए पाटे घरे से नहीं माड़ पड़े
स्तोत्रम गुड़ाक पूजा मंत्र पिले माने ताको तुम नॉर्मली नियो ना पूजा मंत्र गुड़ाक ताको जस्ट आम म्यूजिक लोक मैंने कन्वर्ट कर देछन बोली ताको आम गीत भाबी दसला सो गीत नुहे सो पूजा थाओ 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 बदनामी करना जम्बर बदनामी करना अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम और बढ़िया बढ़िया सब अच्छे ना ना मोर गाइबा दरकार नहीं सब बढ़िया लगे मत ये काल भैरव अष्टकम जोटा मोर छोट बड़ प्राक्ट अच्छे वेरी गुड ସେଇ ଅମିତ ଗଲେ ନିଆଳି ମାର୍କେଟରୁ ଅମିତ ମତେ ଟିକେ କହିବ ସେ ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଉଥିଲା କିଏ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଖୁଲାସା ହବ ତାର ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ଖାଉଥିଲା କିଏ ରାମ ଶିଆଳ ନା ଅମିତ ଖାଉଥିଲେ ହାର୍ଡ କଥାଟା କହିଦେଲି ବୋଧେ ନାଇଁ ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ଲାଗେ କାଳ ଭୈରବ ଅଷ୍ଟକମ୍ देवराज सेव्यमान पावनांग पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकर नारदादि योग्य वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे ठीक है थोड़ा थोड़ा हो जाता मोर पूरा मन अच्छे हो चलो पे मान सारे ना कौन कौच आर कौन अच्छी कह कह न जो तार गाँ तो टिके गायबी कौन मु गाई पारे मोर स्वर नहीं मु जहाँ गाए सीधा सीधा गाए हो जीवा पे मान सारे थैंक यू समस्त को सर मो माइंड रे किछि खाली जॉब जॉब चलो बसिले पढ़िले सब जमी गोटे डिप्रेशन लगुच माइंड फ्रेश इवनिंग रे बुलवा जाऊँ फिर भी किसी मन तुमको दरकार फ्रेशनेस टी बाहर को गोटे जगह को जाओ पूरी पूरी जाओ बुली बाली आस माइंड चेंज हम नुआ जिन देखिले पुराना जिन माइंड चेंज हो जेपर्यंत नुआ जिन साइकोलोजिकली से जिनटा प्रूवेन जेपर्यंत गोटे जिन तुम टाई अफ होच से तुम लगे ना मुझे जिनसा कहीं पारूनी जो तुम मल्टीपल जिन को देख तुमको लगे ना यहाँ मोर किसी भूल ना मो भाई बहुत पिला अच्छा माइंड को चेंज कर हो पिले सारे अगेन थैंक यू समस्त को जय जगन्नाथ सारे सेशन शुभ अपराह्न वंदे उत्कल जननी।